गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेंट रामानुजाचार्य। तो पीएम मोदी जो है वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को जो इनॉग्रेट करने वाले हैं हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पे। और ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो किसको डेडिकेट किया गया है? सेंट रामानुजाचार्य को। ठीक है। तो ये जो है 1017 एडी में जो है बॉर्न हुए थे श्री पेरम्बुदूर में, तमिलनाडु में। और एक वैदिक फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में भक्ति मूवमेंट के टाइम पर, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा सोशल इक्वालिटी और जो है आपके वैदिक नॉलेज के बारे में बात करते थे। तो बहुत ज़्यादा जो पोएट्स हैं हमारे, जैसे अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, कबीर, मीराबाई, इन सब के जो हैं वो इंस्पिरेशन भी इन्होंने दी है बहुत ज़्यादा। तो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात करने वाले हमारे ये सेंट थे। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स लिखे थे जिनको नवरत्न भी कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि क्या करेक्ट प्रोसीजर्स होते हैं रिचुअल्स को फॉलो करने के। जो भी हम टेम्पल्स में रिचुअल्स को फॉलो करते हैं उनको करेक्ट करने का इन्होंने काम किया था। अब इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जा रहा है? इनके जो स्टैचू को बनाया जा रहा है उसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सोशल इक्वालिटी की बात करते थे। कहते थे कि टेम्पल्स के जो डोर हैं वो सबके लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी पोजीशन पे हो, उन सब के लिए वो ओपन होने चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम जो है उसके सबसे ज़्यादा प्रोपेगेट करने वाले जो है वो ये रामानुजाचार्य जी थे। ठीक है। तो अब जो है उन्होंने कहा था कि जो रॉयल कोर्ट्स हैं, उन्होंने उनको बोला था कि आप जो है जितने भी सोशली या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन सबको इक्वल की तरह ट्रीट करो। तो उस समय पर आप सोचो कि वो रॉयल कोर्ट्स को या फिर किंग्स को ये कह रहे हैं कि जितने गरीब हैं, जितने मार्जिनलाइज हैं, उन सबको आप इक्वल्स मानो। तो हम उस टाइम पर आप समझ सकते हो कि ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है हमारी इक्वालिटी की, वो उस टाइम पर प्रोपेगेट कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल सैल्वेशन आ सकती है गॉड के थ्रू। कंपैशन, ह्यूमिलिटी, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन सब को जो है उन्होंने अपने श्री वैष्णवम संप्रदाय उसके अंदर अमेलगमेट किया। मतलब ये एक तरह से वो अपना एक आइडिया दे रहे थे कि वैष्णव युग क्या है, वैष्णव संप्रदाय क्या है। संप्रदाय किसको कहते हैं? कम्युनिटी को। वैष्णवम किसको कहते हैं? भगवान की कम्युनिटी जो है वो कौन सी होगी? जो कि कंपैशन रखने वाली होगी, ह्यूमिलिटी होगी, जिनमें इक्वालिटी होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, उसको ही हम श्री वैष्णवम संप्रदाय कह सकते हैं। तो उनकी जब हम अगर आप लगा लो कि 1000 साल बाद की हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी भी जो है मना रहे हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स अब 1000 साल तो जो है 2017 में होने थे, बट हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी जो है वो हम उनको मना रहे हैं। और उनका 2018 में ये स्टैचू जो है प्रपोज किया गया था और ये अब कंप्लीट हुआ है और इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में, शमशाबाद में। और ये पीएम मोदी इसको अपने जो है वो आने वाले टाइम में इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप। तो इस साल 2022 में इंडिया और इज़राइल के जो हैं वो 30 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब कुछ थोड़ा हम इनका जो इंडिया और इज़राइल के रिलेशन को हम थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से खासकर देखते हैं कि कैसे प्रोग्रेस हुआ है। तो जो मोदी जी की विज़िट थी 2017 की, वो सबसे पहली एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विज़िट थी इज़राइल के लिए। ठीक है। तो जबकि हमने 1950 में ही इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जब वो जो है सोवरेन कंट्री बने थे। लेकिन हमको 4 डेकेड्स लग गए उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है पैलेस्टीनियन कॉज को जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है। तो 1992 में ऐसा क्या चेंज आया? तो सोवियत यूनियन तब तक कोलैप्स हो चुका है। और उस टाइम पर अरब कंट्रीज़ में भी जो है थोड़ा सा एक चेंज ये आया कि उन्होंने पैलेस्टीनियन कॉज को जो है वो सपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि पीएलओ जो आपकी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने इराक की इन्वेजन ऑफ कुवैत को सपोर्ट किया था। इसलिए जो है वो अरब कंट्रीज़ ने पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्ट जो है वो कम कर दिया था। ठीक है। तो 1992 के बाद जो है इंडिया ने एस्टैब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ। और साल 2000 में जब एनडीए वन थी, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, तो उसमें एल के अडवाणी जो है वो सबसे पहले इंडियन मिनिस्टर बने। फॉरेन मिनिस्टर नहीं, इंडियन मिनिस्टर। उस टाइम पर वो होम मिनिस्टर थे। सबसे पहले वो मिनिस्टर बने जो कि इसराइल को विजिट किया जिन्होंने। फिर उसके बाद सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी उन्हीं की गवर्नमेंट में, जसवंत सिंह जो थे, उन्होंने इसराइल में विजिट किया। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मोदी जी ही थे जिन्होंने इसराइल में विजिट किया था।
अब इंडिया और पैलेस्टीनियन कॉज का जो है वो क्या रिलेशन है, तो इंडिया हमेशा पैलेस्टीनियन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता आ रहा है। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता था। और जो है यासिर अराफात जो पीएलओ के जो लीडर थे उनको भी वो एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट की तरह उनको ट्रीटमेंट इंडिया में मिलता था। तो 1975 में पीएलओ को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में ऑफिस खोले अपना दिल्ली में। और 1988 में जब पीएलओ ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की तरह डिक्लेयर किया, ईस्ट जेरूसलम में कैपिटल बनाई, तो इंडिया जो है उसने उनको उसी टाइम पर रिकॉग्निशन दे दिया और यासिर अराफात को हेड ऑफ द स्टेट की तरह इंडिया में रिसीव किया गया। फिर जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो महमूद अब्बास जो है वो 4 बार, महमूद अब्बास कौन थे, जो आपके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आपको पता ही है ये तो, ठीक है। तो वो 4 बार उन्होंने इंडिया में विजिट किया, 2005, 8, 10 और 12 में, ठीक है। इंडिया ने इवन पैलेस्टीन को सब के फेवर में वोट किया कि वो यूनेस्को का मेंबर बन जाए, फुल मेंबर बन जाए। और यूएन में भी वोट किया उनके फेवर में, यूएन जनरल असेंबली में, कि एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट यूएन में विदाउट वोटिंग राइट्स जो है वो पैलेस्टीन को मिले, ठीक है। 2015 में इवन जब न्यू गवर्नमेंट आ गई तो भी इंडिया ने सपोर्ट किया कि पैलेस्टीन का फ्लैग जो है वो यूएन प्रेमिसेस में इंस्टॉल किया जाए। लेकिन शिफ्ट कहाँ से आया, तो ये शिफ्ट हमको देखने को मिलता है जब खासकर न्यू गवर्नमेंट आई, एनडीए 2 आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई जब खासकर, तो महमूद अब्बास जी जब 2017 में इंडिया में उन्होंने विजिट किया, तो हम जो ईस्ट जेरूसलम जो हम कैपिटल बोलते थे पैलेस्टीन की, वो हमने अपनी स्टेटमेंट से निकाल दिया। और जो मोदी जी जब इज़राइल विज़िट किया तो वो रामाल्ला भी नहीं गए, रामाल्ला जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में है, तो वहाँ पर भी वो नहीं गए। इंडिया ने जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो जेरूसलम एज इजरायली कैपिटल का जो प्रपोजल था उसको भी जो है वो अपोज किया। तो हम एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि प्रॉपरली हम इजराइल के इतने ज़्यादा फेवर में चले जाएं कि हमने पैलेस्टीन को बिल्कुल ही जो है वो उनके ऊपर जो है वो हम सारा सपोर्ट उनको हम नहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इवन इंडिया ने 2021 तक जो है वो यूएनएचआरसी में 3 जो है रेजोल्यूशंस में इसराइल के अगेंस्ट वोट किया। इवन फरवरी 2021 में जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के लिए इसराइल को जो है इन्वेस्टिगेशन करने की बात की, तो इंडिया ने उस चीज़ को कंडेम नहीं किया, जबकि जो है पीएम नेतन्याहू वाज एक्सपेक्टिंग कि हम कंडेम करेंगे। लेकिन हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज हम आईसीसी को जो है वो हम ना तो हम उसका पार्ट है, ना ही हम उनके किसी भी एक्शन में जो है वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। सो ये एक हमारा पॉलिसी चलती आ रही है इसराइल और फ़लस्तीन के लिए, एक बैलेंसिंग आप देख रहे हो एलिमेंट है इसके अंदर। हम बहुत ज़्यादा इसराइल के फेवर में भी नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम फ़लस्तीन के भी फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो हम दोनों को बैलेंस करके रख रहे हैं। और ये दोनों कंट्रीज़ को पता है कि इंडिया की अपनी अपनी मजबूरी है और इंडिया की जो है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो कि इंडिया फॉलो करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ओपन कास्ट माइनिंग। तो 5 ऐसे लोग हैं जो कि डेड पाए गए धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में वो ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे थे। तो अब जो है ऑफिशियल्स तो ये कह रहे हैं कि वो इलीगली एंटर करके ओपन कास्ट माइनिंग में से कोल निकाल रहे थे। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? ओपन कास्ट से आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये ओपन सरफेस पे से माइनिंग करने का कंसेप्ट है। तो कोन शेप्ड एक्सकेवेशन होती है इसमें। अब ओपन कास्ट में क्या होता है कि सरफेस माइनिंग की जा रही है। तो इसमें हुआ क्या, ये इंसिडेंट कैसे हुआ कि ये केव इन हो गया, मतलब आप समझ लो कि ओपन स्पेस में ये कोल को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो ओपन माइन जो है वो ही धंस गई। तो धंसने की वजह से ये अंदर चले गए और ये अंदर जो है वो फंस गए और उसकी वजह से उनकी जो है वो जान चली गई, ठीक है। तो ये ओपन माइनिंग जो है सरफेस माइनिंग की टेक्निक है, याद रखना। ओपन कास्ट माइनिंग इज़ अ सरफेस माइनिंग टेक्निक और ये एक्सट्रैक्शन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। जो है कमर्शियली यूज़फुल ओर या फिर रॉक्स जो है वो नियर के नियर द सरफेस ही होते हैं। तो इसलिए ओपन हम इनको ऊपर से ही जो है सरफेस से ही जो है हम उनको माइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर तो टनल बनाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, कोई भी जो है वॉल माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ओपन माइन होती है, सरफेस के पास ही जो है वो आपके रिसोर्सेज होते हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट मतलब उनको कलेक्ट कर सकते हो। केव इन होने की वजह से, धंसने की वजह से जो है लोगों की मृत्यु हो गई है और ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है चंद्रयान 3। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने बोला है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बोला है कि चंद्रयान 3 जो है वो अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो अब चंद्रयान 3 क्या है?
जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसी का ही एक और ये एक सक्सेसर वर्जन है, जिसमें हम दोबारा से ट्राई करेंगे कि हम लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करें। ठीक है, तो जुलाई 2019 में आपको पता होगा चंद्रयान 2 मिशन जो है हमारा ठीक से लैंड नहीं कर पाया था। ठीक है, उससे हमारा कॉन्टैक्ट भी कुछ टाइम के लिए टूट गया था। तो इंडिया जो है वो वही सेम सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस ट्राई करने वाला है। आज तक कोई भी कंट्री जो है, ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो मून के सरफेस पे लैंड तो कर चुकी हैं, लेकिन कोई भी सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मून को पर जो है वो लैंड नहीं किया। तो इंडिया जो है वो चाहता है कि वो सबसे पहली कंट्री बने जो कि सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मून पर लैंड करे। ठीक है, तो इसरो के मुताबिक जो है इसकी कॉस्ट जो है चंद्रयान 3 का जो मिशन की जो कॉस्ट है वो अबाउट 600 करोड़ होगी, जबकि जो है चंद्रयान 2 मिशन की जो कॉस्ट थी वो 960 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस मिशन पे हमारी कॉस्ट जो है वो कम रहे और जो है एज कम्पेयर टू हमारा चंद्रयान 2 मिशन। Okay, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Saint Ramanujacharya. So PM Modi will be unveiling the statue of equality, which is a gigantic statue of uh, uh, Ramanujacharya on the outskirts of Hyderabad. So this Saint Ramanujacharya, let us see something about him also. So he was born in 1017 that AD in Sri Perumbudur, that is in Tamil Nadu, and Ramanujacharya is revered as the Vedic philosopher and social reformer. So why we are celebrating or why we are calling it a statue of equality? Because he was an advocate of social equality and social justice. Okay, so you know that Ramanuja was a revived the Bhakti movement, and he was an inspiration for many poets like Annamacharya, Bhakt Ramdas, Kabir, Mirabai ji. Okay, so he also wrote 9 scriptures, which were known as Navratnas, and he corrected the rituals which were followed in the temples and he throughout India, and he clarified that certain kind of rituals were not in line with how the Vedic scriptures have recommended them. Okay, so that's why he corrected those rituals for the temples. Okay, so why is it called the Statue of Equality? Like I'm saying, that Ramanuja was an advocate of social equality, so he also encouraged temples to open their doors for everyone irrespective of caste or position. So you just see this, that at that time, about 1,000 years ago, he is talking about no caste or no discrimination, and he was the greatest propagator of Vasudev Kutumbakam, that which means all the universe is one family. And he even asked the royal courts, that is he asked the kings or the ruling class, that they should not discriminate between any people based upon any position. So they should also treat the socially marginalized people as equals. And he also propagated the idea of Vaishnavam Sampradaya. So Vaishnavam means basically the gods. Sampradaya means community, the god community. When he spoke about the god community, he said that a community which will be having compassion, humility, equality, and mutual respect, it would be uh, it would be eligible to be called as Shri Vaishnavam Sampradaya. Okay, so this year we are celebrating the 1,000th birth anniversary. Of course, 2017 was the actual 2,000th birth anniversary of Ramanujan, but this year the statute has been completed and we are celebrating the festival of equality this year. Okay, so the statue was proposed in 2018 and now it has been constructed and it will be inaugurated very soon, in the next few days at near Shamshabad, that is on the outskirts of Hyderabad, and PM Modi would be inaugurating this 216-foot tall statue. Okay, so now let us see the next topic, which is India-Israel relationship. So recently, India and Israel have marked 30 years of full diplomatic relations when the when Israeli embassy was opened in February 1992, and Indian embassy in Tel Aviv, that is in Israel, was opened on 15th of May 1992. So what is the benchmark? What is the
what was the culmination of this diplomatic relationship. So Modi ji's famous visit in 2017 was that point when when he became the first prime minister of India to visit the state of Israel. And even though we had recognized Israel in 1950, that is the independence year of Israel, but it took about 4 decades for us to establish diplomatic relationship with Israel, because we were always preferring our relationships, our relationship with Palestinian Authority, or for that matter, its predecessor, that is the PLO, the Palestine Liberation Organization. And only after the Arab support for the Palestinian cause began to weaken, we thought of Israel as a we thought of Israel in terms of establishing our relationship with them. So when the Soviet Union collapsed in 1992, we had to diversify our defense basket, and we had to cooperate with other countries also in terms of science and technology and agriculture. So earlier, India was reticent about its ties with Israel, but from 1992, the ties have been growing. Okay, so during the government of NDA 1, that is when the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was there in the office, LK Advani became the first Indian minister to visit Israel. Of course, he was the home minister at that time, and the first foreign minister to visit Israel was Jaswant Singh, who was also part of Vajpayee ji's government. Okay, in 2003, the president of Israel, Ariel Sharon, became the first I'm sorry, the Prime Minister of Israel, Ariel Sharon, became the first Israeli Prime Minister to visit India. So from that moment, the momentum in India Israel relationship has moved forward. Okay, so what about the Palestinian cause? So India had always been a backer of has always been a supporter of Palestinian right to self determination, even to the extent that we supported Palestine Liberation Organization and its leader Yasser Arafat. So we invited him as the state guest also. So in 1975, India also asked or invited PLO to open an office in Delhi. We also gave them the diplomatic status 5 years later. In 1988, when PLO declared an independent state of Palestine with its capital in East Jerusalem, India granted it recognition immediately. So India even welcomed Yasser Arafat as the head of the state whenever he visited India. So India also opened a diplomatic mission in Tel Aviv, but India also set up the US representative office in Gaza, which was then later on moved to Ramallah, because a Palestinian movement split between Hamas and the PLO. So we have always been supporting the PLO and not the Hamas. Okay, so during UPA's tenure, Mahmoud Abbas, who was the president of Palestinian Authority, because PLO converted into Palestinian Authority, and the president of Palestinian Authority visited 4 times to India. And when there was a question about giving full membership to Palestine in UNESCO in 2011, India supported that. It also supported Palestine to become a non-member observer state at the UN, of course, without voting rights. And India, when the new government, the Modi government came into power, India even supported the installation of Palestinian flag on the UN premises in September 2015. Okay, so of course there was a shift in policy later. Uh, during Palestinian Authority's President Mahmoud Abbas visit in 2017, we dropped the references to East Jerusalem as the capital of Palestinian state, but we simultaneously balanced these overtures to Israel by supporting Palestine also, like when President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel, we opposed it. And even at the certain occasions at UN Human Rights Commission session, or 46th session in Geneva, India voted in against Israel in 3 resolutions. Even in February 2021, when the International Criminal Court, to which India is not a member, so India abstained from commenting against the ICC's
ICC's idea of investigating human rights abuses in Palestinian territory by the Israeli security forces. Okay, so even the then Prime Minister of Israel, PM Netanyahu, wanted India to take a stand against ICC, but India did not say anything because India is neither a part of ICC, or nor we have ever endorsed it. Okay, so of course. That was understood by Israel later on, because they understood that we are neither a part of it and we do not want to um, be a part of any conversation that ICC undertakes. Okay, so now let us see the next topic, which is open cast mining. So 5 persons were found dead after an open cast coal mine caved in. So in Dhanbad district of Jharkhand. So officials have been saying that these people had illegally entered into the open cast mine. So what is an open cast mine? So like you can understand from its term, open cast mining, this is basically surface mining. Okay, you do not need to uh, big build any tunnel into the earth, or build a long wall to excavate or to collect coal. It is just surface mining. But what has happened in this case, the surface from which this coal was being mined, it caved in, it and the people who were mining this coal went inside the caved portion, and they died. Okay, so generally these this open cast mining is different from extractive methods like tunneling into the earth, or even long wall mining. So in open cast mining, it is just surface mining of coal. Okay, or for that matter, other resources. So anyways, now let us see the next topic, which is Chandrayaan 3. So Union Minister of State for Science and Technology has told the Lok Sabha that Chandrayaan 3 is scheduled to be launched in August 2022. It will of course be the successor to Chandrayaan 2 mission, and India will again attempt to land softly on the lunar surface. So it will basically be a repetition of Chandrayaan 2 mission, like I've said. And currently no space agency have yet landed on the southern hemisphere of the moon, and this time we will try to be the first one to land, to make a soft landing on southern hemisphere of the moon. Of course, Russia, US and Chinese, all of them have reached the moon surface, but no agency has yet landed on the southern hemisphere of the moon. So India wants, or ISRO wants, to be the first to do so. And the budget of Chandrayaan 3 will be less than the budget that was that or I'm sorry, the cost of Chandrayaan 3 will be less than the cost that was that the cost of Chandrayaan 2 mission. Okay, so these were our topics for today. Just download the weekly current affairs compilation also from the Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.